Good morning, students. Welcome back to online classes of Mahatma Gandhi Government School, Bhinmal. I am Jitendra Sharma, your English teacher. Today we will discuss a new topic, that is article. Do you know what is article? First of all, we see the definition. In English, a, an, and the are called article. They define whether something is specific or unspecific. इट मीन्स ए एन और द है वो आर्टिकल्स है, और जो हमको डिफाइन करते हैं कोई चीज़ स्पेसिफिक है या अनस्पेसिफिक है. ओके, दे आर ऑफ टू टाइप्स. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल? टू टाइप्स. द फर्स्ट टाइप इज indefinite article. What is the indefinite article? A and N are indefinite article. And the second type is definite article. The is definite article. Now we will discuss one by one. The first type, indefinite article. A and are used before a noun to define it as something non-specific. ए और एन का यूज उन नाउन से पहले किया जाता है जो हमको डिफाइन करता है कोई चीज़ नॉन स्पेसिफिक है. फॉर एग्जाम्पल, ए चेयर इज मेड ऑफ वुड. चेयर इज मेड ऑफ वुड. Now we will discuss the second type, definite article. This is used before a fixed noun. It means whose specific identity is noun. डेफिनेट आर्टिकल का यूज क्या होता है? फिक्स नाउन से पहले किया जाता है और जिनकी कोई स्पेसिफिक आइडेंटिटी है जो हमको पता होती है. फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू कॉल द टीचर. मैं टीचर को बुलाने के लिए गया या बुलाने के लिए गई. ओके, एंड द टीचर ऑफ आवर क्लास. और वो टीचर कौन है? हमारी क्लास का. इट मीन्स इट इज़ आइडेंटिटी ऑफ दैट टीचर, जो क्या है उस टीचर की आइडेंटिटी को शो करता है. और वो आइडेंटिटी कैसी? स्पेसिफिक आइडेंटिटी है उसकी. नाउ वी विल डिस्कस द यूज ऑफ एन. एन का यूज कहाँ कहाँ होता है? The first rules. Indefinite article n is used before those word which begins with vowel sound. n का यूज उन वर्ड से पहले किया जाता है जो वोवल साउंड से स्टार्ट होते हैं. व्हाट इज वोवल साउंड? ए, ई, आई, ओ, यू. दीज आर वोवल साउंड. For example, an elephant. An elephant. 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 As you know, it starts with E, and E is vowel sound, and the pronunciation is elephant. The first letter is A. It means E, so we will use N before it. Elephant से पहले क्या आएगा? N आएगा. For example, the second example, ASS, Ash. The pronunciation is Ash. Ash means गधा. The first letter is A, double A. Ash, Ash. Ash means A, and A is vowel, so we will use N. The second, next example, ORANGE, orange. The first letter is O, and the pronunciation is orange. It means O, and the first letter is vowel, so we will use N. The next example, UMBRELLA, umbrella.
The first letter is U and the pronunciation is umbrella. It means the first letter is A, and this is the vowel, so we will use N. Now we will discuss the second the second rule. N is used before those words in which H is silent. N का यूज उन वर्ड से पहले किया जाता है जिसमें H साइलेंट रहता है. फॉर एग्जाम्पल HOUR. In this word, first letter is H. H is consonant. Although H is consonant, but when we will pronounce it, the pronunciation is O. The first letter is O. It means O, and the O is vowel, so we will use N before it. इसके पहले क्या आएगा? N आएगा. The next example, honest man. Honest man. Also there, the first letter is H. H is consonant, but when we will pronounce it, the pronunciation is honest. The first letter is O, and the O is vowel, so we will use N. Okay, understood? Now we will discuss use of A. A का यूज कहाँ होता है? Indefinite article A is used before a countable noun and begin with consonant sound. A का यूज जो नाउन कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होती है और काउंटेबल होती है उसके पहले किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अ डॉग. द फर्स्ट लेटर इज D and the D is consonant, so we will use A. WOMN, woman. The first letter is W. It means W, and the W is consonant, so we will use A. Stared, it means some important facts. U is pronounced as U. जब U का प्रोनाउंस U के रूप में किया जाता है, इट मीन Y के रूप में किया जाता है, तो हम A का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यूनिवर्सिटी. The first letter is U and the U is vowel, but when we will pronounce it, it is university. The first word is U, it means Y, and the Y is consonant, so we will use A. इसके पहले क्या आएगा? A आएगा. The next example, European. EUROPEN. The first letter is E is vowel, but pronunciation is European. The first letter is Y. U is, it means Y, and the Y is consonant, so we will use A before this one. The next example, unit. UNIT, unit. The first letter is U. U is vowel, but the pronunciation is unit, and the first word is U, it means Y, and the Y is consonant, so we will use A before it. The second example, this one is the other example, umbrella. This one is the other example is umbrella.
the first letter is U, and the U is vowel, but the pronunciation umbrella. In this word, the first letter is U. In this word, the first letter is U, but the pronunciation of U is different. So we will use N before this word and A before this word. Okay. If you have any problem, then tell me personally on my WhatsApp. Thank you.